questions for the players in English and then so skip out for cameras, we good? Good. Can we roll up? Mickey, noticed quite a bit of focus on Junaid Khan in nets this morning. Are we expecting him to play a key role tomorrow? No. To be brutally honest, we've picked a squad of 12. We'll make a decision on our final combination tomorrow morning. You just said that you have finalised the squad of 12. So who are the 3 unlucky guys? The 3 are Junaid Khan, Haris Sahel, and Fakir Zaman. Mickey, Mickey, hello? It's on. There is you might have heard something going on between Anil Kumble and Virat Kohli. Is everything right with you and captain? And do you think that you get any advantage of that stuff with the captain? Look, to be honest, we don't know what's going on. You know, it's that's India's problem. To be honest, all I know is that the captain-coach relationship is almost like a marriage. You've got to be on the same page all the time, and if you're on the same page, you get correct decisions done, and you give clarity to your team, and that's certainly where Safi and myself find ourselves very much on the same page. And as I've said, I've had the privilege to work with so many good captains in my time, and Safi's right up there as one that I'm going to really enjoy working with in terms of our relationship going forward. Mickey, here. Got you. Hi. You have experienced what it means when you coach Australia and play England. Do you understand now what it means when you coach Pakistan and play India? Yeah, I am. I'm certainly finding that out. The passion, the excitement, the expectation. Those are all words that come to mind, and it's fantastic. I just can't wait for tomorrow. The team can't wait for tomorrow. We've been here for 12 days now. We came out of a pretty successful tour of the West Indies. Players have got clear role clarity. Everybody knows how they fit in. Everybody knows what the expectations are and what's required. So we're excited. We just can't wait to get out there, and the occasion's going to be massive, and I'm really looking forward to being part of it. In what way is it different from Ashes? Well, to be honest, I got sacked just before the Ashes. So I never ever experienced the Ashes. I experienced the planning. I didn't experience the actual. But I did experience playing against England, obviously as Australian coach. But more to the point, in terms of rivalry that I've had, has been South Africa Australia, and that is always that was always a massive series for myself and the team when I was South African coach, because that was always the team that we liked to beat. So that was the closest I've probably come to this rivalry. But I think this rivalry is certainly bigger than most, and again, just so excited to be part of it. Mickey, 18-year-old Shadab Khan, do you think he's ready for such a big occasion, ready for such a big match? If you're good enough, you're old enough. That's what I always say, and I think Shadab Khan is certainly good enough. How we go about our combination tomorrow, I'm not sure, and that's something that we'll work out. He's good enough. He's ready. If he gets the opportunity, I'm particularly confident in his ability to produce for us. And he's a match winner. He really is a match winner. So I just think it's so exciting. It's another young Pakistan cricketer on the big stage, and that's great, and that's really good for the country, and it's really good for our cricket. Mickey, you know better than most, you guys know better than most about security issues and teams not coming to Pakistan with a big high-profile game like this. Can you tell us, were events in England dealt with differently? Was there concern in your camp about the situation over here at the moment? To be honest, we didn't fuss with that. It's as cricket staff and cricket coaches and players, we left in the capable hands of our staff to sort out. And our security staff were confident. They put some things in place, I think, in the hotel, and it was all good. So we didn't
certainly didn't clamor our minds with the security issue, and we were pretty confident that it would be dealt with in an appropriate way. South Africa said that there was some uneasiness in their squad about travelling over here. That you didn't notice anything amongst your players, any concern at all? No, our players were good. They got on with what they had to do. The players have been fantastic. You know, they've trained the house down. They've been great, and they haven't worried about anything outside the cricket. So they've been really, really good. Mickey, 300 seems to be the pass score here, and strike rate of Pakistan's opening batsman, it is on the lower side. So do you think that Fakhar Zaman could have created a difference, but he has been left out of the 12? Yeah, he could have. The two guys that we've been working with have done except we've worked massively on our ball rotation, on our strike rates. That's something that we've prioritised in terms of our preparation. We knew that we needed to play a different brand of cricket, and we're working on it. You know, it's work in progress. We've got to play with what our best combinations are, and we feel that the team that we put on the ground tomorrow is going to be a team that we feel can beat India. You know, you pick a team based on conditions, and you pick a team based on your opposition. We feel that we've covered all bases with the 12 that we have, and we'll make that final decision tomorrow. But we've got a lot of faith and a lot of confidence in our opening pair. Mickey, last year when you came to Australia, you said that Babar Azam reminded you of Virat Kohli a fair bit. Coming into this game, do you have to give him any special instructions, given that it's against India he's playing against? As a coach, what do you say to him? Babar's had an unbelievable year. His year has been fantastic in one-day cricket, and you know, across all formats. It's been a learning year for him. Test cricket, he's ridden the rough with the smooth a little bit. One-day cricket, he's been phenomenal. His strike rate's been great. His technique is very, very good. He scores well. He runs well between wickets. There's a lot of expectation on Babar's shoulders now. You know, he's still only 23, but he's an integral part of our batting lineup, and he knows that. He's worked hard. He's prepared well. There's certainly no special message for him. It's just more of the same, because his record at the moment in one-day cricket's particularly good. Mickey, ever since you took over, you've been speaking about the old style of ODI cricket Pakistan play. Has it changed, or is it changing? It's changing. It is changing. Certainly in terms of awareness. Certainly in terms of brand of cricket. It is changing. I'm comfortable where we're at. I thought the last two ODIs in the West Indies we were very, very good. And it's been well documented. But in the first ODI, I thought we could have got another 20 runs in that one. Saying that, we still got 306, and I think that's I think that's testimony to the change that the guys have made in terms of their mindset. It was very interesting to read the other day, and I go through the stats quite regularly, was that in the last year we've scored the third most amount of 300s. England are way ahead, but Pakistan's number 3 on that list, and I think that's testimony to the brand of cricket that we're starting to play. Mickey, you sort of touched upon it earlier, but as an overseas coach, is it an advantage that you have in this match that you were able to sort of draw the heat out of the India-Pakistan rivalry? Are you able to sort of calm things down in your own dressing room, or are you looking to sort of rev the players up and get them to buy into, you know, the sort of the derby mentality? To be honest, we don't have to do anything. The players have been outstanding. The way they've approached the game, I said to them now in the dressing room, it's the most mature I've seen us around a day before training session. What we do is our training sessions are particularly structured leading up until the game. Day before the game is totally up to the players, what they want. And when we started this, the players would go and hit balls and wouldn't really know when to stop. Today we were short, we were sharp. People got exactly what they wanted out of the training nets. They've topped their skills up, and they're ready for a big game. Our change room's completely calm. It's amazing. It's just the outside. It's the outside noise that there is within the dressing room. It is unbelievably calm, unbelievably focused, and very, very excited for the challenge that presents itself tomorrow.
just following on from that, really. So, as far as you're concerned, the players are just treating this like just another game, even though it's an India-Pakistan match. Yeah, we know for us to progress in this tournament, we've got to hit the ground running. So whether it was against South Africa, whether it was against Sri Lanka, the intensity and the expectation, certainly from myself as coach, and I'm sure from the captain, would have been exactly the same. It's just a different opposition, and there's a little bit of hype, and it's a massive game. But every game for us in this competition is massive. We can't take our foot off the pedal in any game, and we can't think, it's India, we've got to just lift ourselves, because that would be very unprofessional. We lift ourselves for every game. We prepare the same for every game. And the expectation on the intensity and skill levels that we display is exactly the same for any opposition. Mickey, you just said that your players, you've seen a lot of maturity in the dressing room. You said that they're calm, they're prepared. A handful of players will be playing for the first time, most likely. How do you kind of, on a day of a match like tomorrow, you said it's the biggest rivalry you've seen, you calm their nerves? Or you can't, what do you tell them? They can only control it themselves, and the only way you control that nervous tension is in your preparation. So, we always talk about it's like the exam. If you've crammed for an exam and you go and write it, you're always on edge. You're always nervous. You always show a lot of tension because you know you haven't done the work. But if you've prepared properly, you'll be nervous, but it'll be an excited nervousness because you know that you're ready. You know you've prepared. There's nothing more you could have done, and then you've just got to go out and execute. So that's where we find ourselves as a team at the moment, extremely well prepared and ready to go. Mickey, I assume that you watched the match yesterday, just obviously despite ignoring the rain that was about. What did you make of the conditions? There wasn't much swing, and the two teams took a very different amount of time, I guess, to adjust their bowling plans when they found that. Does that change your approach or affect it? A little bit, to be honest. It was interesting to see, and I think the wicket is probably, according to the groundsman, going to be just a little bit quicker tomorrow. I thought Australia probably adjusted a little bit too late. We eventually saw a lot of cross seam deliveries. We saw a lot of change. We saw a lot of change of pace, and I think that's how we've got to go. So, when Saf and I sit down tomorrow and have a look at the unit that we want to take out, we've got to offer ourselves options. And that's what we've tried to do with our attack, is offer ourselves options. I think the team that's going to win this competition is the team that can strike. Gone are the days of just containing through the middle. Gone are the days of just, of just soaking up pressure. And if you can go at 5.5s or whatever, you're doing a good job. Those days are gone. You've got to be able to take wickets. We always say you pick an attack to take wickets, and that's what we're trying to do tomorrow. Every one of our attack that we put out in the park tomorrow is going to be able to do something different and offer Saf something different. If you look at, we've got a left arm swing, we could have left arm pace. We've got the swing and hustle and in swing of Hassan. We've got a left arm spinner. We could have a leg spinner. We've got an off spinner. So we've got everything at our disposal tomorrow to allow Safi to pull the strings to make sure that we can try and bowl India out, because that's got to be priority number one. We can't just sit back and just let them score. We've got to attack him, and we've got to look to bowl him out. Thank you. Now the question will do for Sarfraz. वहाब की फ़िटनेस के ऊपर बताइए कि क्या अपडेट है और वो कल खेलेंगे, क्या लगता है कि देखिए जी, वो बिल्कुल फ़िट हैं और बिल्कुल अपनी सिलेक्शन के लिए दस्तियाब हैं इंशाल्लाह। वो कल हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें प्लेइंग 11 सूट करती है इंशाल्लाह, लेकिन वो 100% जो है बिल्कुल मैच के लिए फ़िट हैं। सरफराज, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी इवेंट्स में वो कितना ख़ास नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ के। आप क्या समझते हैं कि एज ए प्लेयर कुछ प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है इतने बड़े मैच में, या पाकिस्तान के पास इतने स्टार प्लेयर्स नहीं है जिस तरह के पहले वसीम वकार हुआ करते थे जो कि उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते? हाँ देखिए, पहले का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी की जो हमारी टीम है आप देखें कि
आई थिंक सिर्फ 2 या 3 प्लेयरों ने पहले चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट जो है वो इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है। तो आई थिंक देखें प्लेयर बहुत ज़्यादा नए हैं और हमने यही कहा है कि कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना नेचुरल गेम आप खेलें जो जैसा खेलते हुए आते हैं। तो कोशिश यही है कि हम कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम फ्रीली खेलें और अच्छा परफॉर्म करें ग्राउंड के अंदर, और कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ये मैच जीतेंगे। सरफराज, इंडिया की जो बैटिंग है काफ़ी टॉप हैवी है, काफ़ी बल्लेबाज जो है ऊपर अच्छी बैटिंग करते हैं। हमने बांग्लादेश में भी देखा था कि आमिर ने काफ़ी दिक्कतें पैदा करी थी। कोई स्पेशल प्लान टॉप 3 के लिए इंडिया के? देखें बिल्कुल हमने प्लान एग्जीक्यूट किया है, उनकी सारी इस वीडियो क्लिप्स वगैरह देखी है, और जहाँ तक आपने बात की बिल्कुल नो डाउट उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऑन द पेपर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारे पास ये बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। जिस तरह मिक्की ने बताया कि हमारे पास सारी वैरायटी है, लेफ्ट आर्म पेसर भी है, लेफ्ट आर्म क्विक बीच में भी है, बीच में हसन अली हमारे पास हैं। तो ऑप्शन हमारे पास पूछे हैं इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट अवेलेबल बॉलिंग ऑप्शन लेके जाएँ और उनको आउट करें। सरफराज, पाकिस्तान के 9-10 प्लेयर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो 2015 में एक डिबेट चली थी कि भाई पाकिस्तान टीम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं सोचती, तो कोई ऐसी नई चीज़ ये यंग टीम करना चाह रही है कि वो जो एक चल रहा है कि मुसलसल इंडिया जीत रहा है आईसीसी इवेंट्स में, उसको ख़त्म करने के लिए क्या कोई प्लान है आप लोगों के? सर देखें बिल्कुल प्लान हमने बड़ा बनाया है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह देखेंगे कि आप कल कुछ नई चीज़ें हम करते हुए दिखाई देंगे इंशाल्लाह, जो कि पहले नहीं हुई इंडिया के अगेंस्ट। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो आपने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह आपको, और एक टीम आपको अलग खेलती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। सरफराज, क्या तुम्हें लगता है एज कैप्टन कि पाकिस्तान जो बड़ा मैच होता है इंडिया से, उसमें आमतौर पे या तो थोड़ा क्रम्बल कर जाता है या अपनी उस पर टॉप लेवल पे नहीं खेल पाता, तो क्या वजह लगती है? और अभी तुम्हें लगता है कि उस सारे प्रॉब्लम से जो भी होता है इश्यूज़, उससे टीम ज़रा बेहतर कर सकेगी परफॉर्म? देखिए होता ये है कि असल में इंडिया पाकिस्तान का हमेशा मैच जो है वो बहुत टफ होता है, मीडिया में भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि शायद वो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा प्लेयर पे इफेक्ट कर जाती हैं, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि अपने प्लेयर से यही बात की है कि इन सारी चीज़ों को नहीं सोचना, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा हाइप क्रिएट होगी, पब्लिक में मीडिया में सारे शोज़ वगैरह ऑन होते रहेंगे, कोई हमारे प्लेयर्स उनको बोलेंगे, उनके प्लेयर्स हमें बोलेंगे। तो हमने अपने प्लेयर्स को ये कहा है कि ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलें और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है कि कोई परफॉर्म करता है तो वहाँ से हीरो बनता है। तो हमने यही कहा है कि अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें, जो आपका गेम है जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से फ्रीली माइंड को खेलें, इंशाल्लाह अच्छी नीयत से खेलेंगे तो रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। आप बात तो कर रहे हैं कि प्रेशर ना हो, लेकिन इतने सवाल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यही जो शब्द है कई बार रिपीट होता है, शाहिद अफरीदी जैसे बड़े प्लेयर भी बोलते हैं, तो कहीं नहीं लगता कि बैक ऑफ द माइंड यही वर्ड जो है जो पाकिस्तान की टीम को ड्रेसिंग रूम में लगातार दबाव में बना के रखता है? क्योंकि जो बातें होती हैं आपके पाकिस्तान से भी शुरू होती हैं। शाहिद अफरीदी ने एक बड़ा बयान दिया कि ऑन पेपर टीम इंडिया कहीं ज़्यादा मजबूत है, अनएक्सपीरियंस टीम है, शायद ठहर नहीं पाएगी टीम इंडिया के आगे। ये पाकिस्तान टीम के बारे में कहा उन्होंने? नहीं, पाकिस्तान टीम के बारे में कहा, इंडिया से कंपेयर करते हुए। देखें जी सर, हर किसी की देखें अपनी राय है, शाहिद भाई ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ऑन पेपर इंडिया की टीम मजबूत है, लेकिन आजकल का दौर जो है वो चेंज हो गया है। जो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। ऑन द डे जिस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया वो टीम निकल जाएगी। ऑन द पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कल जिस तरह न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस की, तो ऑन द डे जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो टीम मैच जीतेगी। सरफराज, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, ऑन पेपर लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो प्रेशर इंडिया पर ही होगा ना? बिल्कुल, देखें इंडिया पे ही प्रेशर होगा, हम पे तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम लोग इस वक्त नंबर 8 पे खड़े हुए हैं और इससे हम नीचे क्या देंगे। तो हमारे पास ये कि हम कोशिश ये करेंगे कि फ्रीली होकर खेलें, और अगर हम यहाँ से हम जीतेंगे तो हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी। हो सकता है कि हम जीतेंगे तो फिर उनकी रैंकिंग शायद डामाडोल होगी। सरफराज, ये जो प्रेशर फ्री की बात आप कह रहे हैं, ये पहले जब इंडियन टीम में होते थे वो न्यूज़पेपर बैन कर देते थे, टेलीविज़न बैन कर देते थे, अभी तो मोबाइल है, तो आप अब क्या, आपके जो लड़के हैं क्या कर रहे हैं आप? न्यूज़पेपर बैन किया होटल में? सर देखें, अब ये चीज़ें तो सारी बैन हो नहीं सकती, आपको पता है सोशल मीडिया इतना आ गया है, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब ये चीज़ें कह ही सकते हैं हम लोग, और कोशिश यही की है कि इन चीज़ों को ना सोचें और अपना क्रिकेट पे फोकस रखें। तो अब ये जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर बैन कर दिया, न्यूज़पेपर तो सर कोई पढ़ता ही नहीं है यहाँ पे तो देखें सर, अब कोशिश ये कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपना मैच पे फोकस करें। सरफराज, कंडीशंस बहुत तेज़ी से बदलती हैं इंग्लैंड में, और कल ये भी हो सकता है कि धूप हो या बारिश हो। आपकी टीम के कंपोजिशन के हिसाब से क्या, स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या सही रहेगा? बारिश बेहतर रहेगी या धूप बेहतर रहेगी आपके हिसाब से? सर मेरे ख्याल से दोनों टीमों को धूप ज़्यादा बेहतर लगेगी। हाँ, उनको भी जो है बारिश अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बारिश में ऑब्वियसली दोनों एशियाज़ की टीमें हैं और चाहेंगी कि धूप निकले, अच्छी कंडीशन हो मैच के लिए। तो ऑब्वियसली लेकिन हमारे पास भी वो भी अपने कॉम्बिनेशन से आएंगे, हम भी अपने कॉम्बिनेशन से आएंगे और चाहेंगे कि
अच्छा मैच हो और प्रॉपर एक अच्छा पूरा 50 ओवर्स का मैच हो। हाँ देखिए, कंडीशन के हिसाब से जो है हमारे पास, जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया कि हमारे पास बीच में स्ट्राइक बॉलर भी हैं, और उसके अलावा बीच में जैसे शादाब का भी जिक्र आ रहा है कि कंडीशन के हिसाब से देखें, अगर शॉर्ट फॉर्मेट का गेम होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन हैं। तो ऑप्शंस पूरे हैं, इंशाल्लाह कल जो भी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से टीम उतारेंगे अपनी। सरफराज, दो सवालात हैं। एक तो बड़ी बातें होती है कि कोहली की विकेट काफ़ी अहम होगी, तो कोहली को पकड़ने के लिए कोई अहम प्लान है? और दूसरा सवाल साथ साथ कर लेता हूँ कि पहले जब भी पाकिस्तान इंडिया का एनकाउंटर होता था तो बात होती थी कि बेस्ट बॉलिंग का बेस्ट बैटिंग से मुकाबला है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने देखा कि इंडिया की बॉलिंग भी थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है, उनके पेसर्स थोड़े से बेहतर हुए पहले के मुकाबले में, तो उनके पेसर्स के लिए कुछ प्लान आप लोगों ने तरतीब दिया है? देखिए जी, नो डाउट जो है कोहली की विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कैप्टन है और उनका मेन प्लेयर है, तो हमारी कोशिश होगी कि उसको जल्दी आउट करने की कोशिश करें ताकि इंडिया की टीम बैकफुट पे आए। और जहाँ तक आपने बात की कि इंडिया का पेस देखें, उनके भी जो प्लेयर्स हैं काफ़ी टाइम से रेगुलरली खेल रहे हैं, उमेश यादव हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं और बुमराह और शामी हैं, तो आई थिंक उनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी की है यहाँ पे, पिचेस का पूरा आइडिया लिया, हमने 12 दिन यहाँ पे हुए, तो कोशिश करेंगे जो हमने प्रैक्टिस की है उसको अवेल करें इंशाल्लाह और ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दें उनके अगेंस्ट। आपकी टीम में शुएब और मोहम्मद हफीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत खेल चुके हैं, तो आपने क्या इनसे कुछ कहा है कि यंगस्टर्स को एडवाइस करें कैसे डील करना है इन लोगों से? देखें जी, बिल्कुल हफीज़ भाई और शुएब भाई का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया के अगेंस्ट खेलने का, और आई थिंक इन्होंने लड़कों से बात भी की है और मेरी खुद बात हुई कि क्योंकि मेरा भी एज अ कैप्टन बड़े इवेंट में एक पहला मैच है, तो उनसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया अपना, तो इंशाल्लाह देखें बिल्कुल जो उन्होंने हमें बताया तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सरफराज, जुनैद आपके 12 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में उन्होंने 4 आउट किए थे और वेस्ट इंडीज़ में भी वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे और ऑन एंड ऑफ टेस्ट, T20 और वनडे में जगह नहीं बना पाए वहाब रियाज, तो आपके लिए मुश्किल फ़ैसला था जुनैद को बाहर करना? देखिए बिल्कुल, देखें जुनैद अभी कंसिस्टेंटली रिसेंटली लास्ट सीरीज़ में अच्छी बॉलिंग करता हुआ आया था, लेकिन हमने जो अपना कॉम्बिनेशन हम जिसको देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्ट्राइक बॉलर जो है बीच में, हमें एक ऐसा फील हो रहा था कि हमें एक तेज़ बॉलर जो है वो बीच में चाहिए, तो इस वजह से एक मुश्किल डिसीजन था, लेकिन ये कि बेस्ट कॉम्बिनेशन में कुछ अच्छे प्लेयर्स बाहर बैठ जाते हैं, तो ये कि जुनैद हमारा मेन प्लेयर है, इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन बनेगी इंशाल्लाह तो दोबारा प्लेइंग 11 में आएगा वो। सरफराज, जो इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, हम देखे है कि ऑन द फील्ड राइवलरी बहुत है, लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा रिलेशन, वार्म रिलेशनशिप होती है, पर इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा मैच नहीं खेले है अभी पिछले 2-3 साल में। आपकी टीम के साथ इंडियन टीम का ऑफ द फील्ड रिलेशनशिप कैसा है? सर देखें, मैं 2007 में पहली बार इंडिया के अगेंस्ट खेला था जयपुर में, और उसके बाद फिर 2008 में जो आपने बताया कि ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी रिवाइवली है, और मैंने देखा है इंडियन टीम को हमारे प्लेयर के साथ कोरमा खाते हुए, बिरयानी खाते हुए यूसुफ भाई ने बड़ी ज़बरदस्त दावत की थी उनकी कराची में, तो आई थिंक ऑफ द फील्ड जो है बहुत अच्छी जो है उनकी दोस्ती है, और नज़र भी आती है टीवी पर जब भी चैनल पे एक साथ वगैरह बैठते हैं, हरभजन हो, शुएब भाई हो या वसीम भाई, जितने भी प्लेयर्स बैठते हैं सारे, तो बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन जो भी हमारे प्लेयर्स हैं जैसे शुएब भाई हैं, हफीज़ भाई हैं, तो ताल्लुकात मुझे लगता है कि जब मिलेंगे तो अच्छे ही होंगे बिल्कुल ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड का मुझे नहीं मालूम। सरफराज, इंडिया पाकिस्तान गेम्स टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच हो जाता है दोनों टीम का, गिवन रिसेंट रिकॉर्ड जो होता है, पाकिस्तान यू थिंक पहले अदर टीम्स को खेल के बाद में इंडिया खेलना चॉइस करेगा? देखिए सर, हमेशा से यही होता है कि मैं जब से मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैंने यही देखा है कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान का ही पहला मैच होता है, तो आई देखिए सर जो भी अच्छा है कि जो भी है वो शुरू में ही हो जाए, अगर हो पहले हो या आखिर में होना तो है ना सर, तो अच्छा है पहले हो फिर आखिर में फाइनल में खेलें, तो फिर बात एक ही है सर, जो होना है शुरू में ही हो जाए सर। सरफराज, जब वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो हौसला बढ़ाने के लिए कोई मशवरे देने के लिए इमरान खान को बुलाया था, अब है लेकिन अभी तो कोई ऐसा मशवरे देने के लिए नहीं आया, क्या मशवरों की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद ही किस तरह हौसले बढ़ाए अपने खिलाड़ियों के? सर देखिए बिल्कुल, वो इमरान भाई को बेसिकली वहाँ पे वो आए थे वहाँ पे, तो हमारी टीम ने भी एक फ़ायदा उठाया कि इमरान भाई वहाँ पे मौजूद है कि उनसे फ़ायदा उठाया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो इस बार तो कोई नहीं आ पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर्स हैं, वो हमारी टीम के लिए दुआगू होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करें, और इंशाल्लाह हम भी ये चाहेंगे कि उनकी दुआओं के साथ अच्छा परफॉर्म करें इंशाल्लाह। सरफराज, गुड लक फॉर टुमारो, और ये बताएं कि कल वो कहते हैं सरफराज धोखा तो नहीं देगा, और विराट कोहली की बात हुई थी कि जुनैद खान की जो हिस्ट्री है, उन्होंने जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस खेले थे, इन्होंने 4 मरतबा बोल्ड किया हुआ है विराट कोहली को, तो उनका ना होना आप क्या समझते हैं कि कुछ इफेक्ट करेगा या?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जुनैद ने 4 बार आउट किया विराट को, लेकिन देखिए वो कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, वो हम थी 5 साल पहले की बात है, तो अब थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन हमने थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन हमने देखा, जो हमें सूट किया, जो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 बन सकती थी, तो हमने उसी के मुताबिक टीम उठाने की कोशिश करी और इंशाल्लाह जो बॉलर खेलने तो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि विराट कोहली को जल्दी आउट करें। थैंक यू।